Very good morning, 8th class. Welcome to the class. Today we will again continue with the DG for your history books, chapter number 8, chapter number 9, Women, Caste and Reforms. Right? दयानंद सरस्वती आर्य समाज के बारे में आज हम स्टडी करेंगे और विमेन रिफॉर्मर्स जो है उनको स्टडी करेंगे. Swami Dayanand Saraswati was one of the greatest reformers of Hindu society in the 19th century. He was born in 1824 and was called Mool Shankara. As a child, he studied Sanskrit and the Vedas. From a very young age, Dayanand questioned the traditional beliefs of Hinduism. At the दयानंद सरस्वती थे वो बचपन में उन्होंने जो है बहुत सारे जो हिंदू वेद थे उन सबको स्टडी किया था. बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा जो है हम जो हिंदू रिचुअल्स होते हैं उनको लेके क्वेश्चंस रेज करते थे कि हवन क्यों करते हैं, हम यज्ञ क्यों करते हैं, हम ठीक है आई कैन नॉट वर्शिप एन आइडल, मैं किसी मूर्ति की पूजा नहीं कर सकता. इस तरीके की जो इनकी एक सोच थी, थॉट थी, वो डेवलप हो रही थी इनके अंदर. ठीक है. early age of 14, he rebelled against the practice of idol worship. In 1846, he left home and became a wandering monk. वॉन्डरिंग मॉन्क मतलब 1846 में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया और एक साधु बन गए. ऐसे साधु जो वंडर करते रहते हैं, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे. ठीक है, ऐसे साधु बन जाते हैं, ऐसे सन्यासी बन जाते हैं. After wandering in search of God for several years, he found Swami Virjananda and adopted him as his guru. उसके बाद स्वामी वीरजानंदा को ये अपना गुरुजी जो है मान लेते हैं और इनसे जो है लर्निंग्स लेते हैं. Anand stayed under the Swami's tutelage for 2.5 years. When he left, Swami Virjananda asked him to spread the knowledge of the Vedas in society. How did Dayanand do this? Swami Dayanand was of the opinion that Hinduism had been corrupted by irrational and evil practices because it had diverged from the founding principles of the Vedas. He also attacked the priests for discouraging common people from reading the Vedic scriptures. Another complaint that Dayanand had against the priests was that they encouraged rituals which he believed were based on mere superstition. Accordingly, Dayanand made it his mission in life to restore Hinduism to its original purity. How did he? ये क्या करते थे, जो हिंदुइज्म की ओरिजिनल प्योरिटी थी उसको वापस लाना चाहते थे कि मतलब अंधविश्वास पे बेस्ड नहीं होना चाहिए. जो भी आपका विश्वास है, जो भी आप मानते हैं किसी चीज को, वो जो है अंधविश्वास पे बेस्ड नहीं होना चाहिए. तो ये क्या चाहते थे, रिस्टोर करना चाहते थे हिंदुइज्म की जो ओरिजिनल प्योरिटी थी उसको. ठीक है. He do this. In 1863, he started preaching his doctrine of one God. He decried polytheism and image worship. He believed that the Vedas were the fountainhead of all knowledge and contained the essence of Hinduism. According to him, even the fundamentals of science could be traced to the Vedas. देखो इनका क्या मानना था, ये वेदास को जो है फाउंटेन हेड मानते थे नॉलेज का. ठीक है, कि यहीं से जो है सारा ज्ञान लोग जो है ले सकते हैं. इवन ये इनका ये मानना था जो साइंस की फंडामेंटल्स है वो भी जो है हमें वेदास के अंदर मिलती है. साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, जो थ्योरीज हैं साइंस की, वो भी कहीं ना कहीं हमारे वेदास से ही ली गई हैं. ठीक है, तो ये फाउंडेशन मानते थे वेदास को नॉलेज का. Hence, he took up the slogan, "Back to the Vedas." ये स्लोगन इन्होंने दिया, बैक टू वेदास, यानी कि हमें वेदास को Dayanand's दोबारा स्टडी Vedic करना message चाहिए. was based on the fundamental premise that all men were equal.
Hence, he emphasized respect and reverence for all human beings. सबसे पहली चीज जो ये लोगों को बताते थे वो ये थी कि हमारे वेदों के अकॉर्डिंग हर एक ह्यूमन बीइंग जो है इक्वल है, ठीक है, ऑल मैन आर इक्वल, सभी इंसान जो है इक्वल है, तो हमें वी शुड रिस्पेक्ट रिवर ऑल ह्यूमन बीइंग, यानी कि हमें सबको एक समान समझना चाहिए, सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। He also propagated the Vedic notion of the divine nature of the individual, wherein the body was the temple that housed the soul or Atma. और इसके अलावा ये ह्यूमन बीइंग को भी क्या कहते थे कि आप खुद ही जो है एक डिवाइन सोल है। डिवाइन सोल मतलब आपके अंदर ही भगवान है, आपकी जो आत्मा है, द बॉडी इज द टेम्पल, शरीर जो है एक मंदिर है, दैट हाउस इज द सोल और आत्मा, जिसके अंदर हमारी आत्मा या सोल जो है रहती है। तो सोल का क्या टेम्पल है, हमारी बॉडी जो है वो क्या है, एक मंदिर है हमारी आत्मा का। Dayanand published his views in his books, written in Hindi. The most famous of these is Satyarth Prakash. इन्होंने कुछ बुक्स लिखी, सबसे फेमस थी इसमें सत्यार्थ प्रकाश। Dayanand's Back to the Vedas message influenced many influential thinkers of his time, such as Sri Aurobindo. What's more, Dayanand did not confine his teachings only to intellectuals. He preached directly to the masses. Hence, he had a vast following in states such as Punjab, Uttar Pradesh, Rajasthan, and Gujarat. Having propagated religious reforms, Dayanand now turned his eyes towards social reforms. In 1875, he founded a society to launch an attack on many social practices of the time. ठीक है, इन्होंने समाज सुधारों की, सोशल रिफॉर्म्स की शुरुआत करी और जो उस समय की सोशल प्रैक्टिसेस थी, जो बुरी प्रैक्टिसेस थी, उनको खत्म करने के लिए इन्होंने जो है रिफॉर्म्स करी। Do you know what this society was called? आर्य समाज के थ्रू सोशल रिफॉर्म। It was called the Arya Samaj. Founded in Bombay, the members of the Arya Samaj were guided by 10 principles. आर्य समाज की स्थापना जो है बॉम्बे में की गई थी और 10 प्रिंसिपल्स थे इसके, जो भी आर्य समाज के लोग थे वो इनको फॉलो करते थे। 10 सिद्धांत थे इनके, प्रिंसिपल्स थे जिनको फॉलो करना होता था। What were these principles? They included the belief that God is the cause of all knowledge and that God is formless, omniscient, eternal, endless, and unchangeable. देखो, गॉड, इसका पहला प्रिंसिपल क्या कहता था कि गॉड जो है, भगवान जो है नॉलेज का कॉज है, नॉलेज का कारण है, ठीक है, भगवान की वजह से ही नॉलेज हमें मिलती है। लेकिन ये जो भगवान है ये फॉर्मलेस, इनकी कोई फॉर्म नहीं है कि आप मूर्ति में ढूंढने लगो, ठीक है, ऐसा कोई फॉर्म नहीं है इनका, ऑमनीसेंट है, मतलब हर जगह विद्यमान है, इटर्नल है, यानी कि हमेशा रहने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि भी खत्म हो जाएंगे, एंडलेस है और अनचेंजेबल है, ठीक है, कभी बदलते नहीं है। मतलब लोगों को ये बता रहे थे कि आत्मा जो भगवान है, परमात्मा जो है वो एक शक्ति है, ना कि कोई किसी मूर्ति में आपको उसको ढूंढने की जरूरत है, ठीक है, और भगवान जो है हर जगह प्रेजेंट है। The Arya Samaj propagated the study of the Vedas, acceptance of truth, promotion of Vidya or knowledge. इन सब चीजों को प्रमोट करते थे, स्टडी ऑफ वेदास, वेदास को पढ़ना जो है इसको बढ़ावा देते थे, प्रोपोगेट करते थे, एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रूथ, सच्चाई को एक्सेप्ट करने पे जोर देते थे, प्रमोशन ऑफ विद्या और नॉलेज, लोगों के अंदर ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हो, इस चीज को प्रमोट करते थे। And performance of actions in accordance with dharma. The prime objective of the Arya Samaj was to promote the physical, spiritual, and social good of everybody. The Arya Samajists believed that the hereditary caste system and practice of untouchability lacked Vedic sanction. They also opposed child marriage and encouraged widow remarriage. ये जो है चाइल्ड मैरिज
रीमैरिज को जो है बंद करवाना चाहते थे, अपोज करते थे, विरोध करते थे और विडो रीमैरिज को प्रपोर्ट करते थे कि विधवाओं का पुनर्विवाह होना चाहिए। ठीक है। After Dayanand's death, a number of Dayanand Anglo-Vedic schools were set up, popularly known as DAV schools. ठीक है, इनकी डेथ के बाद जो है काफी सारे जो है स्कूलों को खोला गया जो कि इसी तरीके से वैदिक एंग्लो वैदिक स्कूल थे, जिनको हम डीएवी स्कूल के नाम से जानते हैं, दयानंद एंग्लो वैदिक पब्लिक स्कूल्स। ठीक है, इनकी स्थापना की गई, बहुत सारे स्कूल्स खोले गए। It was in Lahore in 1886 that Lala Hansraj opened the first DAV school. सबसे पहला डीएवी स्कूल कहाँ खुला था? लाहौर में। किसने खोला था? लाला हंसराज ने 1886 में। The curriculum of these institutions was based on a harmonious blend of traditional Indian learning and Western scientific studies. ठीक है, एक ब्लेंड होता है इनके करिकुलम में, इनका जो सिलेबस होता है उसमें कि ट्रेडिशनल जो इंडियन वेदास है उनको इंक्लूड किया जाता है और साथ में जो मॉडर्न टेक्निक्स है उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो मॉडर्न और एंशिएंट दोनों चीज़ों का एक बैलेंस मिक्सचर होता है। ठीक है, कि लोगों को जो है साइंस भी पढ़ाई जाती है और साथ में जो हमारे वेदास है उनकी स्टडी भी उनको करवाई जाती है। What's more, these schools played a major role in instilling the spirit of self-reliance and self-respect among. ठीक है, बच्चे आत्मनिर्भर बन सके, सेल्फ रिलायंस हो और सेल्फ रिस्पेक्ट, बच्चों के अंदर आत्मसम्मान की भावना डेवलप हो, इन चीजों पे ये स्कूल ज्यादा फोकस करते हैं। Indians. Many of these schools were promoted to college level as well. कुछ स्कूल जो है कॉलेज लेवल तक भी प्रमोट किए गए हैं। Here's an opportunity to recap the main points covered in this session. अब महिलाओं ने कौन कौन से रिफॉर्म्स इनिशिएट किए उनको पढ़ते हैं हम। जेंडर डिवाइड इन 19th century। 200 years ago, the gender divide was very marked in Indian society. 200 साल पहले क्या था? जेंडर डिवाइड बहुत ज्यादा शार्प था, मतलब कि महिलाओं और पुरुषों के बीच में बहुत ज्यादा जो है डिफरेंसेस थे। Girls were not allowed in education. लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था। Indeed, in Bengal, it was believed that if a woman was educated, she was sure to become a widow. ठीक है, बंगाल में क्या माना जाता था? ये कहा जाता था कि अगर लड़कियां जो है पढ़ेंगी तो वो विडो हो जाएंगी। ठीक है, विधवा हो जाएंगी। The custom of child marriage prevailed and girls were married off, sometimes when they were as young as 8 and 9 years old. ठीक है, बहुत कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। 8 या 9 साल की उम्र में भी जो है लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। चाइल्ड मैरिज बहुत प्रिवेलिंग थी। Often they were forced to marry men much older than themselves and hence were widowed at very. मतलब क्या होता था? बहुत कम उम्र की लड़कियों की अपने उम्र से काफी बड़े जो जेंट्स होते थे उनके साथ शादी कर दी जाती थी, तो बहुत छोटी उम्र में ये विधवा भी हो जाती थी। ठीक है, early ages. Ironically, while men were allowed to take 2 and even 3 wives at a time. ठीक है, 2 या 3 शादियां पुरुषों को करना अलाउड था। Widows were not allowed to remarry. Indeed, it was considered honorable for women to choose death by burning themselves on the funeral pyres of their husbands. ठीक है, बल्कि महिलाओं को जो है विधवा का जो है रीमैरिज करना अलाउड नहीं था, बल्कि जो विडो हो जाती थी उसको ये कह के जो है ये बोला जाता था कि अगर आप अपने हस्बैंड के चिता के साथ खुद को जला लोगे तो आप जो है सती कहलाओगे, आप जो है काफी जो है बड़ा त्याग करोगे। मतलब प्रमोट किया जाता था सती प्रथा को कि महिलाओं को अपने पति के साथ ही चिता के साथ ही जल जाना चाहिए। Women who died in this way were called sati or virtuous women. Reflect on this treatment of women. Do you think that they were treated fairly? इस तरीके का जो व्यवहार हो रहा था
था महिलाओं के साथ, क्या आपको लगता है ये सब चीजें सही हो रही थी? Contrast this with how women are treated in present-day society. आप कंपेयर करो कि आज के टाइम में लड़कियों को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है और आज से 200 साल पहले किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा था, तो क्या दोनों चीजें सही हो रही हैं? You will agree that there is a marked difference in women's role in society in the 19th century and their role in present times. ठीक है, धीरे धीरे महिलाओं But का how रोल did बढ़ा this है। change come about in the treatment of women and the role they play in society? किस तरीके से ये रोल चेंज किया है? आज जो है हर फील्ड में जो महिलाएं हैं वो पार्टिसिपेट कर रही है, तो ये सारा जो चेंज है 200 सालों के अंदर, ये किस तरीके से आया है? There were many women reformers in the 19th century who wanted to break free from the shackles imposed by society and fought for reforms, especially in the field of education. देखो How did they do this? 18 Discuss among yourselves and share. क्या हुआ उस 19वीं शताब्दी में, 19th सेंचुरी में बहुत सारी जो महिला रिफॉर्मर्स थी, फीमेल रिफॉर्मर्स थी, वो आगे आई ताकि जो महिलाओं की जो कंडीशन है उनको इम्प्रूव किया जा सके, स्पेशली एजुकेशन की फील्ड में, कि महिलाओं को शिक्षा दी जा सके ताकि वो आगे अपने फ्यूचर को बेटर बना सके। इस तरीके के बहुत सारे रिफॉर्म्स महिलाएं जो है लेकर आई, जिसकी वजह से धीरे धीरे जो है हमारी जो सोसाइटी थी वहाँ पे विमेन की जो कंडीशन थी वो इम्प्रूव होती गई। In the latter part of the 19th century, in many aristocratic Muslim households of North India, women were taught to read the Quran in Arabic. Certain Muslim reformers, such as Mumtaz Ali, reinterpreted verses from the Quran and set forth an argument in favor of women's education. मुमताज अली क्या थी? एक मुस्लिम रिफॉर्मर थी जिन्होंने जो है इंटरप्रेट किया था कुरान को, ठीक है, उसका जो है मतलब लोगों को बताया था, और जो महिलाओं का राइट है एजुकेशन के लिए उसको जो है प्रमोट किया था कि महिलाओं को भी जो है पढ़ने का, एडुकेट होने का राइट है। It was around this period that Urdu novels were written. Women could now read about religion and domestic management in a language that they could understand. इसके बाद उस समय जो है उर्दू लेवल नॉवेल्स जो है लिखे जा रहे थे, तो महिलाएं जो है अपने रिलीजन के बारे में, डोमेस्टिक मैनेजमेंट के बारे में उस भाषा में पढ़ सकती थी जिस भाषा को वो समझती थी। From the early 20th century, the Begums of Bhopal were proactive in encouraging women's education. They founded a primary school for girls in Aligarh. जो बेगम थी इन्होंने जो है प्राइमरी स्कूलों की स्थापना की अलीगढ़ में। Begum Rokeya Sakhawat started schools for Muslim girls in Patna and Calcutta. इन्होंने पटना और कलकत्ता में गर्ल्स स्कूल की स्थापना करी। She was outspoken in her views and lashed out at religious leaders of every faith for according an inferior position to women. ठीक है, ये बहुत प्रमुखता से जो है विरोध करती थी, जो महिलाओं की By the पोजीशन दिखाई जाती थी, तो जो भी ये धर्म गुरु होते थे इनको जो है अपोज करते थे कि आप ऐसे क्यों करते हो, लेकिन ये जो है सवाल पूछती रहती थी कि क्यों महिलाएं इंफीरियर है, महिलाओं को जो है सेकेंडरी पोजीशन दी जाती है और महिलाओं को इतने कम राइट्स दिए गए। इन सब बातों के लिए काफी आउटस्पोकन थी। 1880s. Indian women were studying at universities. Many of them became teachers. Others were training to be doctors. ठीक है, टीचर्स और Did you डॉक्टर्स know बनने that लगे। Anandi Bai was the first woman doctor of India? पहली महिला डॉक्टर इंडिया की कौन थी? आनंदी बाई। As the doors of education gradually opened up for women, it is hardly surprising that many of them took to the pen to voice their views on how they were being treated in society. Can you think of any writings published by women at that time? लिखना शुरू किया महिला रिफॉर्मर्स ने। Tarabai Shinde from Pune published a book, Stri Purush Tulna, स्टडी किया था हमने चैप्टर में भी, स्त्री पुरुष तुलना नाम की किताब, criticizing the social differences between men and women. जहां इन्होंने आलोचना करी थी जो ट्रीटमेंट था महिलाओं के साथ। Rasa Sundari Devi,
wrote an autobiography in Bengali titled Amar Jiban. इन्होंने अपने जीवन के ऊपर आत्मकथा लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी। बंगाली भाषा में इन्होंने, रसा सुंदरी देवी ने अपने जीवन की आत्मकथा लिखी थी अमर जीवन के नाम से। Pandit Rambai, a great scholar of Sanskrit, felt that Hinduism was oppressive towards women and wrote a book about the miserable lives of upper caste Hindu women. She founded a widow's home called Sarda Sadan at Pune. विडो हाउस बनाया था इन्होंने To provide shelter to widows who had been treated badly by their husbands' relatives. ठीक है, ऐसी महिलाओं के लिए जो विधवा थी और जिनके इन-लॉज जो है उनके हस्बैंड की डेथ के बाद उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे। ठीक है, तो ऐसी विडोज के लिए शेल्टर प्रोवाइड करा था। Here, women were trained so that they could become economically self-sufficient. यहाँ पे महिलाओं को जो है ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि महिलाएं जो है आत्मनिर्भर बन सके, सेल्फ रिलायंट बन सके, वीविंग, स्पिनिंग, एम्ब्रॉयडरी ये सब काम करती थी और पैसे कमाती थी। So, by the end of the 19th century, women were actively working towards reform. They wrote books, edited magazines, and founded schools and training centers. From the early 20th century, they formed political pressure groups to push through laws for female suffrage and better health care and education for women. प्रेशर ग्रुप्स बनाए ताकि महिलाओं के लिए कानून बने, महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिले, बेटर हेल्थ केयर मिले और अच्छी शिक्षा मिले। How do you think the Orthodox people reacted to all this? अब आपको क्या लगता है जो ऑर्थोडॉक्स पीपल थे, जो पुरानी सोच के लोग थे, उन्होंने इन सारे रिफॉर्म्स के लिए किस तरीके से सोचा होगा? Orthodox Hindus felt that Hindu women were adopting Western ways. This, they believed, would corrupt Hindu culture and erode family values. ठीक है, इनको लगता था ये वेस्टर्नाइज हो रही है महिलाएं और ये हिंदू कल्चर को खराब कर रही है। Orthodox Muslims were also worried about the changing role of women in society. इसी तरीके से मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स लोग भी यही सोचते थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या होती है? देखो, जो अध्यात्म की ओर जो लेके जाती है, ऐसी सोसाइटी। ठीक है, जो अध्यात्म की ओर लोगों को लेके जाए उसको हम बोलते हैं थियोसॉफिकल society was started by Madame Blavatsky at Adyar near Madras. When Annie Besant came to India in 1893, she became the second president of the society. The primary objective of the society is universal brotherhood without distinction. ठीक है, इसका मेन उद्देश्य क्या था इस तरीके की सोसाइटी का कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड यानी कि वैश्विक भाईचारे को बढ़ावा दिया जा सके, किसी के बीच में भी कोई धर्म को लेके, कास्ट को लेके कोई भेदभाव ना हो, सभी मिलजुल कर एक भाईचारे की फीलिंग से एक दूसरे के साथ रहें। The members of the society seek the meaning and purpose of existence through study, reflection, and loving service. As president of the Theosophical Society, Annie Besant lectured all over India, especially on the subject of education. She also opened schools wherever possible. She often tried to draw women into the movement in an effort to make them participate more in public life. In 1898, Annie Besant founded the Central Hindu College at Banaras, which later developed into the Banaras Hindu University. A few years later, she started the Central Hindu School for Girls. She also founded a library of rare Sanskrit books. एक लाइब्रेरी बनवाई इन्होंने रेयर संस्कृत बुक्स के लिए। ठीक है, Here's an opportunity to recap the main points covered in this session. तो यहाँ तक आप जो है पढ़ के आएंगे, इसके आगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।